दोस्तों, क्या आप जानते हैं डेटाबेस सिस्टम क्या होता है? आज का जमाना डिजिटल वर्ल्ड का है. व्हेन वी से डिजिटल, एवरीथिंग इज ऑनलाइन. व्हाट डू यू मीन बाय ऑनलाइन? आप जो भी काम करते हो, मे इट बी बैंकिंग, मे इट बी टिकट रिजर्वेशन और मे इट बी बिल पेमेंट ऑफ योर मदर्स फोन, एवरीथिंग हैपेंस ऑन योर फिंगर टिप्स. आई रिमेम्बर, जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को अरेंज करके रखते थे फाइल में. वो बिल पेमेंट करके आते थे. बिल पेमेंट करके आने के बाद उनका सबसे पहला काम होता था उस बिल को फाइल में एक प्रॉपर ऑर्डर में रख देना. ये क्यों करना पड़ता था? क्योंकि अगर जरूरत पड़े तो उन्हें वो बिल दिखाना पड़ता था कि हाँ, हम लोगों ने बिल पेमेंट किया है. तो वो बिल ढूंढने में आसानी हो, इसलिए वो पहले से ही प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखते थे. Nowadays, have you seen such a bills coming to your place? कभी कभी आते हैं या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग तो ईमेल वाला प्रेफरेंस लेके सारे बिल्स अपने ईमेल पे ही मंगवा देते हैं. नाउ, वेयर डज ऑल दीज पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन गेट स्टोर्ड? कहाँ पे स्टोर होती है ये सब चीजें? सो दोज ऑल थिंग्स आर गेटिंग स्टोर्ड इनटू योर डेटाबेस सिस्टम. अभी डेटाबेस क्या होता है, इसे कौन यूज करता है, आफ्टर ऑल व्हाट इज द नीड ऑफ डेटाबेस? इन दिस वीडियो you will get answer of all these kind of questions. So to define it more properly, database is nothing but it's a organized collection of some structured information. In very easy words, I can define it like डेटा के सिस्टमैटिक कलेक्शन को डेटाबेस कहा जाता है, क्योंकि इसे इस तरीके से बनाया गया है, अगर आपने इसमें कुछ डेटा डाल दिया तो उसे ढूंढना या फिर उसे मॉडिफाई करना, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द यूजर्स. ना ये सब जानने के लिए हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे व्हाट इज अ डेटा एंड व्हाट इज अ इंफॉर्मेशन. डेटाबेस को समझने से पहले सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन. इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं? So, in simple words, your data is nothing but it's a small portion of your information. ये किसी व्यक्ति या फिर वस्तु या फिर कोई सी जगह से जुड़ा हुआ हो सकता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, योर नेम, योर एज, हाइट, वेट, योर मोबाइल नंबर, योर ईमेल एड्रेस एंड योर परमानेंट एड्रेस. सो ये सारी जो चीजें होती है ना, दिस इज ऑल कॉल्ड एज रिलेटेड इंफॉर्मेशन. सो डेटा इसका एक छोटा सा हिस्सा होता है. अभी आप अगर स्क्रीन में सामने देखो तो यू कैन सी सम इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, से लेट्स ऑब्जर्व दिस. आई कैन सी सम नेम सचिन. Okay, then I can see some number here. You can see a profession, testing. Then there is a game called as cricket, football. There are some places: Pune, Bangalore, Mumbai. Now, can you tell me what all these things are? Can you tell me what is this 29? Is it age of someone or is it weight of someone? What is this value is depicting? क्या आप बता सकते हो यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है पूर्वेश, ये लड़का कहाँ रहता है? Does he belong to Pune or does he belong to Mumbai? नहीं ना, क्योंकि whatever you are able to see in front of your screen is nothing but it's a data. It's a raw data. इसे अगर मैं properly organize करूं, information. अब ये जो डेटा होता है ना, ये कोई भी टाइप का हो सकता है. इट कैन बी ऑफ नंबर, इट कैन बी ऑफ अ स्ट्रिंग, इट कैन बी डेट लाइक डेट ऑफ बर्थ, और इट कैन बी अल्फा न्यूमेरिक एज वेल. कभी कभी तो कोई कोई डेटाबेसेस आपको फोटोज भी स्टोर करने के लिए अलाउ करते हैं. सो
It's not just a string or it's not just a set of characters. It is after all a complete external object. अब जब इस डेटा को अगर हम लोग प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करें तो ये हमें दे सकता है कुछ इंफॉर्मेशन. Let's have a look at this example now. Okay, so let's say I'm trying to arrange this data in a systematic manner. So this is information. By looking at this, can you tell me what is 29? Yes, this is age of Divya. Can you tell me which city Purvesh belongs to? हाँ, यहाँ पे पुणे लिखा हुआ है. Why can't we say that कि पूर्वेश मुंबई को बिलोंग करता है? क्योंकि पूर्वेश जिस रो में लिखा हुआ है उस रो में सिटी की वैल्यू एंटर की गई है पुणे. इन सिंपल वर्ड्स मैंने इस डेटा को अरेंज किया है. ओके, एंड इसमें अजम्पशन ऐसे है कि इस रो में जो भी वैल्यूज ऐड की गई है वो पूर्वेश से रिलेटेड वैल्यूज है. सो पूर्वेश इज ऑफ 11 years. Purvesh belongs to Pune city and area of interest of Purvesh is football. Now, when we store data in database, there are certain characteristics are there which are getting associated with the data, which help to provide some meaning to that data. Say for example, what is 11? It is age of Purvesh. So if you see what I'm relating is, I'm relating age and I'm relating Purvesh. How come it is possible? Because of its characteristics. My data has been arranged in such a way so that it can get the specified meaning. Now, whatever column headings you are able to see here, okay, these are referred as attributes. And if you see all these particular rows wherein for each of the column there is some value is present. So each of this row is called as record. If you store such a multiple rows together, that forms a table. And a database is a collection of multiple tables. So a database can have more than one table as well. For any organization, data is an important component. In order to keep track of their day-to-day operations, organizations need to maintain a database. Now, this collected data will be help them to generate certain information. Now, let me take example of university. आप लोग सब कॉलेज जाते हो, correct? So आप कौन हुए? आप हुए students. Okay, you attend different lectures and for every lecture, attendance will be taken. You might have different systems to collect this attendance, correct? Maybe your teachers would be using some registers to note down your attendance, or maybe you might have a punch systems as well. Now, when it comes to the exams, many of the universities keep the compulsion that minimum 70% presently has to be there for the student. If a student have attended less than 75% of their lectures, they are not allowed to give the exam. Now, how can we calculate this 75%? This 75% will be calculated based upon the attendance recorded on the daily basis. So please keep in mind, database are definitely they provide you a best way of storing and managing the data, but it also help you to make certain decisions. I'll take some other example. Let's say you must be using Facebook like apps. Many a times Facebook comes up along with your most liked photograph. How come it identify that? For every post what you do onto the Facebook, how many people have liked it, how many people have commented on that particular post, everything is getting stored, and somewhere in the down the line Facebook shows you that memory for you.
1 year ago, 2 year ago. This photo was most commented in 2012. So these all things are possible because these all things are stored into the database. If you observe, database has been involved or in almost all the activities of daily lives, starting from school to work, or maybe your social gatherings, maybe government activities, maybe any other organization like NGO. Everywhere you will find there is a database. Have you ever thought of having an organization who do not keep track of their database? Let me give you an example of online shopping portal. Let's say Amazon, Flipkart like shopping portals. Think about if they do not maintain their customer records. Whenever you place some order for the online purchase, how come that product is getting delivered to your doorstep? It is because customer information is maintained. Not only the customer information, it even include the product information. So every business need to keep such information. They need to keep track of everything. Who are they? What are their different products? Who all are the employees of the organization? Who all are the customers? What are the sales history? What are the different services they are offering to the public or maybe to their customers? Everything need to be maintained. Now, based upon the type of a business and the way how they are utilizing this data, the data size could vary from few megabytes to certain terabytes as well. There could be n number of areas wherein your data and information is getting stored. So ये data collect कैसे किया जाता है? So generally ऐसे कुछ forms fill up करने होते हैं. Okay, so this is one of the, when you enter some information onto this form, आपकी information database में जाके ऐसे rows and columns में store हो जाती है. This systematically arranged information help us to retrieve certain statistical reports like this. So formally, database system is defined as computerized record keeping system. Its overall purpose is to store information and to allow users to retrieve that information whenever it is required. If required, उन्हें अपना डेटा अपडेट करते आना चाहिए. जैसे कि आप आपकी फेसबुक की प्रोफाइल फोटो जब चाहिए तब चेंज कर देते हो. अगर आपको चाहिए तो आप आपके व्हाट्सएप का स्टेटस चेंज कर देते हो whenever you want, correct? So similarly, in database system, when you are recording your details, your users should be able to modify those details quickly. The main important aspect of database, I'll repeat again here, data and the information. So data is nothing but it refers to what is actually stored into the database. So like 11 is a data, but if I say 11 is a age, okay, whose age? It's Purvesh age. So this becomes a information. So information is nothing but it is meaning of a data which is understood by some user. Now there are lot many systems which makes use of database. Okay, here are few examples like enterprise business, banking and finance, universities, railway and airline reservation systems, telecommunication systems. There are lot many others. अगर आप देख थोड़ा सा ध्यान से सोचो इन सिस्टम्स के बारे में. जैसे एंटरप्राइज बिजनेस है, उन्हें अपने एम्प्लॉयज का डेटा रखना होता है, उन्हें अपने कस्टमर्स का डेटा मेंटेन करना होता है, उनके प्रोडक्ट्स, उनकी ऑफरिंग्स, एवरीथिंग नीड टू बी मेंटेन. फॉर एवरी क्वार्टर दे इवन नीड टू पब्लिश द रिपोर्ट अबाउट देयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज वेल. अगर मैं बैंकिंग एंड फाइनेंस डोमेन का एग्जांपल लूं, दिस बैंकिंग एंड फाइनेंस डोमेन help you to perform all of your transactions online. आप टैक्स ऑनलाइन पे कर देते हो, आप बैलेंस ट्रांसफर ऑनलाइन कर देते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो. क्यों? बिकॉज आपका पेमेंट ऑनलाइन हो जाता है.
यूनिवर्सिटीज, देर आर मेनी यूनिवर्सिटी विच ऑफर्स यू डिस्टेंस लर्निंग एज वेल. आप बैठते कहीं और हो, आपकी यूनिवर्सिटी होती कहीं और है, बट फिर भी आप लेक्चर्स अटेंड करते रहते हो. आप बहुत बार ऑनलाइन एग्जाम देते हो. सो दीज ऑल थिंग्स आर नथिंग बट दिस आर फिजिबल बिकॉज ऑफ डेटाबेस सिस्टम. थिंक अबाउट रेलवे एंड एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम्स. व्हाइल बुकिंग टिकट्स, आप जिस सीट के लिए बुक कर रहे हो, अगर वो सीट किसी और ने बुक कर ली है, वो अवेलेबल में दिखाई नहीं जाती. इफ यू थिंक अबाउट टेलीकम्युनिकेशन, ये तो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि डेटाबेस के बिना हो ही नहीं सकता. थिंक अबाउट हाउ डज योर पोस्टपेड कनेक्शन वर्क. आप कनेक्शन लेते हो, सर्विसेज यूज करते हो, एट द एंड आपको बिल आता है, और वो बिल एक्यूरेट आता है. एक्यूरेट क्यों आता है? बिकॉज आपकी हर एक एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई है. बिकॉज ऑफ दिस योर बिल जनरेशन हैपन्स एक्यूरेटली. सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. मैंने यहाँ पे तीन थोड़े ही एग्जाम्पल्स मेंशन किए हैं. क्या आपको और पता है? कैन यू लिस्ट देम डाउन? Now there are lot many systems which makes use of database. Okay, here are few examples like enterprise business, banking and finance, universities, railway and airline reservation systems, telecommunication systems. There are lot many others. अगर आप देख थोड़ा सा ध्यान से सोचो इन सिस्टम्स के बारे में. जैसे एंटरप्राइज बिजनेस है, उन्हें अपने एम्प्लॉयज का डेटा रखना होता है, उन्हें अपने कस्टमर्स का डेटा मेंटेन करना होता है, उनके प्रोडक्ट्स, उनकी ऑफरिंग्स, everything need to be maintained. For every quarter, they even need to publish the report about their profits and losses as well. अगर मैं बैंकिंग एंड फिनेंस डोमेन का एग्जांपल लूँ, this banking and finance domain help you to perform all of your transactions online. आप टैक्स ऑनलाइन पे कर देते हो, आप बैलेंस ट्रांसफर ऑनलाइन कर देते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो. क्यों? बिकॉज आपका पेमेंट ऑनलाइन हो जाता है. यूनिवर्सिटीज, देर आर मेनी यूनिवर्सिटी विच ऑफर्स यू डिस्टेंस लर्निंग एज वेल. आप बैठते कहीं और हो, आपकी यूनिवर्सिटी होती कहीं और है, बट फिर भी आप लेक्चर्स अटेंड करते रहते हो. आप बहुत बार ऑनलाइन एग्जाम देते हो. सो दीज ऑल थिंग्स आर नथिंग बट दिस आर फिजिबल बिकॉज ऑफ डेटाबेस सिस्टम. थिंक अबाउट रेलवे एंड एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम्स. व्हाइल बुकिंग टिकट्स, आप जिस सीट के लिए बुक कर रहे हो, अगर वो सीट किसी और ने बुक कर ली है, वो अवेलेबल में दिखाई नहीं जाती. इफ यू थिंक अबाउट टेलीकम्युनिकेशन, ये तो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि डेटाबेस के बिना हो ही नहीं सकता. थिंक अबाउट हाउ डज योर पोस्टपेड कनेक्शन वर्क. आप कनेक्शन लेते हो, सर्विसेज यूज करते हो, एट द एंड आपको बिल आता है, और वो बिल एक्यूरेट आता है. एक्यूरेट क्यों आता है? बिकॉज आपकी हर एक एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई है. बिकॉज ऑफ दिस योर बिल जनरेशन हैपन्स एक्यूरेटली. सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. मैंने यहाँ पे तीन थोड़े ही एग्जाम्पल्स मेंशन किए हैं. क्या आपको और पता है? कैन यू लिस्ट देम डाउन? Now, how these databases are involved in our day-to-day life? To understand this, let's have a look at Susan's life. So we are just having a look at a single day from her life. So here is the start of her day. ऑफिस जाने से पहले सुजन को हैबिट है फेसबुक और ट्विटर चेक करने की. While she is checking her Facebook and Twitter updates, think about सुजन के फ्रेंड्स का डेटा कहाँ पे स्टोर है. सुजन के कितने पोस्ट को किसने किसने लाइक किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है. In her lunch break, she goes to the medical store. उसे कुछ दवाई खरीदनी है. अब when she went to the pharmacy store, केमिस्ट ने उसके कंप्यूटर पे देख के बता दिया कितनी दवाई अवेलेबल है और कौन सी दवाई अवेलेबल नहीं है. हाउ कम इट इज पॉसिबल? सो अगेन समवेयर यू आर डीलिंग विद सम ऑफ द डेटाबेस सिस्टम्स. प्लीज कीप इन माइंड. ऑफिस खत्म होने के बाद सूजन ग्रोसरी स्टोर जाती है एंड शी परचेज सम स्टफ फॉर हरसेल्फ. आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप डी मार्ट, बिग बाजार जैसे स्टोर्स में जाओ, आप रैक से चीजें उठा के लेके आते हो एंड यू गो टू द बिलिंग काउंटर बिफोर एग्जिट. वहां पे जो बिल काउंटर पे बंदा होता है, वो बस बारकोड स्कैन करता है एंड दे कम टू नो अबाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट. व्हाट इज द कॉस्ट, हाउ मच डिस्काउंट इज अप्लाइड,
how much weight is there, what is the size of a pack, everything. So ये भी details कहीं पे तो database में store होते हैं. At night she plans for her personal trip. वो वहीं पे बैठे बैठे एयरलाइंस टिकट भी बुक कर लेती है और होटल रूम भी बुक कर लेती है. Now, while she is performing all these kind of activities, उसे पेमेंट करना होता है. She makes use of credit card or she might be making use of online banking. कैसे होटल मैनेजमेंट को पता चलता है कि कौन सी रूम किसने बुक की है, कस्टमर का डेटा कहाँ रखा जाता है. सो ये सारी चीजें भी डेटाबेस से ही रिलेटेड है. She makes some online purchase for herself and she makes use of her credit card to make the payment. But before selecting those particular products, she also gets a look at the recommendation for the customers. ये सारी चीजें भी कहीं पे तो डेटाबेस में स्टोर है. So let's have a look at what are the different databases she is interacting. So when she is trying to access Facebook or Twitter, she is actually accessing users, friends information and the post information. When she goes to the chemist store, she actually interacting with the database which contain data about products, sales and the customers. Same applies for the grocery store as well. There is also she is dealing with the product, sale and customer. Ultimately, at both the places, what she does is she makes a purchase, correct? So she is dealing with a similar kind of a data. Now, while she is booking airlines and the hotels at that particular time, she is dealing with the flight database, she is dealing with the hotel database as well as customer database. And when she makes an online order for certain products, at that time again she is dealing with the product database, sales database and customer database. Now definitely this data will be maintained by the respective organizations. Say for example, if she makes this online shopping with the Amazon, this database will be maintained by Amazon. If she purchase say grocery from the D-Mart, so D-Mart is responsible to maintain this database. So what we are looking at is we are looking at the activities of Susan's life. Think about your own activities. Since morning, when you get up, how many different systems you interact with and what could be the different databases in which you are working, in which you are dealing. I would not say working, but yes, you are dealing, you are part of that system. So here are a few exercises for you. You need to list down the names of different online systems you are using. You can try to identify related data as well. Like you must be playing some online games. Think about what is the what are the different data which are getting stored about this. Have you anytime observed any of the system which does not have any kind of a data involved into this? अगर आपको कुछ note होता है, if you find out such a system, please let us know in comments as well. How does your attendance get recorded in your college? Does your college makes use of traditional data recording or method, or do they use online systems? Have you ever noticed electricity bill or the telephone bill? See what are the different details or are mentioned onto that bill. Observe the applications like Facebook and Twitter and try to write down what all information it stores about you and your friends. And ultimately, I would like to highlight my favorite example here. Write down what data does Google stores to keep your timeline records. आप जहां भी जाते हो, भले ही आपको याद ना रहे, गूगल को तो याद रहता ही है. गिव इट ट्राई. एग्जैक्ट 1 साल पहले आप कहाँ थे? ट्राई टू फाइंड आउट विद गूगल टाइमलाइन फीचर. Trust me, you will feel amazed. So that's the power of database.